Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Today we are going to discuss a very interesting topic that is the buzzword these days, alternate dispute resolution. I'll be embarking upon and discussing what ADR is all about and what kind of ADR mechanisms are there to resolve different disputes. First of all, I tell you what is ADR. Alternate dispute resolution includes alternate methods of helping people resolve legal problems. Before going to court, there is an involvement in an independent third person called a neutral. I emphasize on that. It's a third person who's a neutral who tries to help resolve or narrow the areas of conflict in ADR. ADR means the wide variety of methods by which conflicts and disputes are resolved other than through litigation. ADR refers to any means of settling disputes outside of courtroom. ADR typically includes early neutral evaluation, which we call E&E, negotiation, conciliation, mediation, and arbitration. As burgeoning court queues arise, rising costs of litigation and time delays continue to plague litigants. More states have begun experimenting with ADR programs. Some of these programs are voluntary, others are mandatory. The process of settling a dispute without litigation by various methods like arbitration, mediation, negotiation, conciliation, etc. is called ADR. And ADR does wonders to help reducing the burden of litigation from the courts of law and has proved to be a peaceful mechanism to resolve the disputes. ADR may be termed as alternative of the conventional techniques of dispute resolution, such as litigation. It is a motion for evolving constructive approach and mindset towards dispute resolution. Therefore, ADR means and include a substitute to long-established litigation method. It consists of mechanism and techniques for resolving disputes other than ordinary exercise of litigation. It is a non-judicial process. It is not an alternative to traditional methods. In restrictive sense, I would say, nature of ADR is a combination of words that literally means to solve the dispute by alternate mechanisms. As mentioned earlier, these are techniques of dispute settlement outside of the traditional government judicial process and solve disputes by mutual understanding between the parties. ADR is extra support to the judicial system by easing the burden on the same. It is less expensive and time efficient. According to Justice Mustafa Kamal of Bangladesh, it is a non-formal settlement of legal and judicial dispute as a means of disposing of cases quickly and inexpensively. It is the spirit and not the form of law that keeps the justice alive. This is what ELLW said. Liars are peacemakers. According to Ibrahim Lincoln, he said that discourage litigation, persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often the real loser in fee and expenses and waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will still be enough business. This is what Abraham Lincoln said. And meaning of dispute, the term dispute in ADR means a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal or counterclaim or denial by the other. The term resolutions under the auspices of
ADR. Sure. ADR can be initiated at any time. This is the advantage of ADR. I'm talking about advantages first. ADR can be initiated at any time when the parties to the dispute desire to do so. This mechanism provides the speedy justice as compared to the litigation process. It is less time consuming and cost effective too. ADR is a flexible mechanism. A neutral person helps both the parties in reaching to a peaceful conclusion to the dispute. ADR methods reduce the burden of courts and pendency of cases. ADR reduce the gravity of contentious issues between the parties. The results of ADR process can be kept confidential if the parties so choose. Parties have an increased chance of preserving their business and social relationship. But at the same time, there are certain disadvantages of ADR as well. With the exception of arbitration where the arbitrator makes a binding decision, the ADR process may not always yield a resolution. This means that money and time can be invested in a process that does not guarantee its resolution. The finality and binding nature of an arbitrator's decision can sometimes be viewed as a disadvantage because it may not always please the parties and court will often refuse to review it. The neutral party, arbitrator, mediator, conciliator, whosoever is the neutral party, will charge a fee for their time and expertise, and depending on their popularity, these fees may be substantial. A judge, on the other hand, charges no fee for his decision. An arbitration clause in a contract is usually binding and court will not waive it unless both parties request for litigation. There is a limited protection offered to the parties, especially with respect to discovery, as the common rules governing discovery in litigation do not apply. A mediator, conciliator, or arbitrator can only resolve matters which are of civil nature or which concern money, so they cannot make authoritative injunctive orders. I stop here and explain to you today. You will be able to understand it once for all. People confuse arbitration and mediation with each other. First of all, I tell you what happens in a court of law in this adversarial system of practice. One party files a claim, which we call plaint also, statement of claim. A claim is filed, and then as a result of appearance of the defendant through process of the court, he has a right to file a reply to that claim, which is called the written statement. And on the basis of pleadings of the parties, issues are framed, and after framing of the issues, evidence is recorded. Once the evidence is concluded, both the parties advance their arguments, and the judge, on the basis of the issues and questions of law and fact involved and the arbitration rendered by both the parties, renders a judgment after hearing the parties and giving them a right of hearing, and that decision is called judgment. Now, if a party, which is a plaintiff or the claimant, onus is always upon him to prove whatever he has alleged in his claim, is able to prove his case is decreed or partially decreed. And if the defendant is able to defend himself and dislodge the claim of the defendant by their evidence, and they prove that defendant's claim is not based upon any evidence and it is against law and facts, the suit will be dismissed. And again, a judgment will be passed. In the first case, a judgment will be passed in the favor of the plaintiff. And in the second case, the dismissal of the plaintiff's claims will also result in a judgment, but the judgment will spell out that plaintiff has not
been able to prove his case. Therefore, his suit is, or his claim is dismissed and is not accepted as such. Of course, they have a right of appeal to challenge. Both the parties have a right to appeal, to go to next court to challenge it. Now, what happens in arbitration? Parties at the time of entering an agreement, in their agreement or contract, they put in an arbitration clause. And in the arbitration clause, they agree that instead of going to court, if there is a dispute, they will be getting it resolved through arbitration. And they have no intentions to go to a court of law. And that arbitrator could be named in the agreement itself. It could be a person, it could be an institution, or if one of the parties does not, invoke this arbitration clause and goes to the court straight on in case of a dispute, the court, on the first date of hearing, the other party, if it invokes the arbitration clause, will refer the matter to arbitration and keep the suit in a state of, keep this application for appointment of arbitrator or this suit in a state of suspended animation and send it to arbitration, because parties themselves have chosen to get it resolved through a forum which is outside the courtroom and which is arbitration. Well, now what the arbitrator does, he asks the parties to file a claim, and then a counterclaim is also filed by the other party. On the basis of the arbitrator, who is a replica of a court system, arbitration is a replica of court system, records evidence of both the parties, and on the basis of evidence, he renders a judgment which is called award. Then award is made rule of the court, and it goes to the court. Both parties have a right to file objections to that, and if objections are rejected, that will be made rule of a court, and that will have the force of a decree. But if the arbitration award is dismissed, that does not result in passing of a degree in favor of the claimant. So arbitration is again something which is a replica of a court system, and the arbitrator is like a judge. He gives a verdict, a judgment. His judgment is only called award. That is the difference. But arbitration in all and for all intent and purposes is something which is like court. Idea is to get it resolved quickly. Within 120 days of entering into an arbitration, the arbitrator has to render an award. But here I tell you something which will be of information to you. In last 76 years, this has proved to be a failed phenomena. Arbitration has proved to be a failed phenomena, because we are dealing with 1940 Act, which says the award of the judge, the arbitrator is again go to the court, and it is to be made the rule of the court, and objections are to be heard, and then appeal, and it is like court, and sometimes a bad alternative to even court system. And then most of the arbitrators are retired judges or retired engineers who are, with the passage of time, they become very old, and extensions are sought from time to time. And instead of these 120 days, it will never happen, And even in international arbitration, Pakistan is 100% loser as of today in all cases in which we have gone for international arbitration. So arbitration in Pakistan at the moment is a failed phenomena. In the modern world, they have a law, which is UNCITRAL law, which says the arbitration award is per se enforceable at law. You need not go to the court again to make it a rule of the court. And it is a very serious threat to litigation, and most of the cases are resolved outside the courtroom. And for that matter, I give you a data that in America, only 5% of the cases go to for litigation. The rest of them are resolved through any of the modes of ADR. This could be arbitration, this could be mediation, this could be E&E, it could be a summary judgment, it would be a judicial settlement, and there are so many
other modes. I'll be discussing those as well. But even in England, after Wolf reform, almost 80% of the cases are resolved outside the courtroom. And same as the situation in so many countries, even our next door neighbors in India. It's a very popular concept, and I was reading from one of the chief justices of Bangladesh what he was saying. Incidentally, I'm their mentor in arbitration. They took a leaf out of our book, and they have gone miles. They are very, very successful in ADR. Their success ratio is more than 70%. Same is true for so many other countries. But this is for point of information that I'm telling you. Now, we come to arbitration. What is arbitration? Keep it in mind. I give you an example. If I'm visible to you, look at my screen. I am holding this mobile phone. This is cellular phone is of Apple. And Apple guys, they are in San Jose, California. They are based there. And they are manufacturers of Apple phones. If the Apple company give distribution rights to someone in Pakistan for Apple phones, and the agreement or contract is to the following effect, that they will be supplying all these phones to one distributor, one agent in Pakistan, who will be further selling it in Pakistan. There will be 1 month's breathing period, and if within 1 month's time those phones are sold or not sold, in any case they will have to make the payment to the Apple company. Let's say this business relationship is going on, and at one point of time the person who is having the distribution rights for these phones in Pakistan becomes a defaulter. And let's say like 50 crore rupees are outstanding against them, and they have not made the payment for the phones which they got from Apple company. What will happen now? Here is a dispute, and in case of a dispute, if you go to our common system of law which is prevalent, the present judicial system, the Apple company will file a suit by engaging a lawyer, and when they file a suit, then there will be service affected upon their agent in Pakistan. Once it is affected, he also has a right, that company also has a right to engage a counsel. They will be defending it, they will be filing written statement, there will be issues, there will be evidence recorded. And I tell you, the normal timeline of these kind of cases in Pakistan is like 12 to 13 years. Let's say after 13 years, the Apple company, they succeed, a decree is passed in their favor, which is upheld right up to Supreme Court. What they will do is they will file an execution. And when they file an execution, maybe the other party is ruined and they are not able to pay anything. Even if they pay, they will not be getting any interest on that. It will just be the original money, and that is it. And you see, after 13 years, what will be the value of these 50 crore rupees? And so much money lost, while for litigation they have to pay the court expenses, the lawyer's fee, blah, blah, blah. And same is true for the agent, the defendant also, he'll have to pay all this. So nobody is happy. And end of the day, if he doesn't have anything, maybe he goes to jail. What is good about it? Nothing. And now I come to arbitration again. If there is an arbitration clause and an arbitrator is appointed, again I will tell you, the arbitrator gives an award. That award is again subject to challenge, that goes to Supreme Court. Same situation, maybe worse than the court system also. That is also to nobody's advantage. Well, what is my mediation thing which I am propagating these days? And I am doing it since Caesar was entering Rome. I'm pioneer of ADR in this part of the world. I have been doing it more than 27 years ago. As a mediator, if somebody put in
puts in an mediation clause in the agreement, and they come to me, and I am an accredited mediator, maybe in Lahore Chamber of Commerce or KCDR and Karachi, or maybe court-appointed, mediator I am. What I will do is, the parties will come to me. I will be doing a process will be totally confidential. Here, there is no question of filing any suit or written statement, nothing as such. In a common room, what we call a conference room, there's a parties meeting, and in the first meeting, I hear both the parties, what is their case. I explain to them that's this process of ADR, mediation, which is that nothing is binding on you. I'm not going to give you any verdict. This will be your decision. I'll only be facilitating you to talk to each other, and we'll be working on those solutions. So both the parties will be telling their case to me. Once I have understood the case, I'll take one of the parties to a separate room, which we call caucusing, and I'll take him there, and I'll tell him that whatever you will be telling me, that will be totally privileged, and I'll not pass on anything to the other party. And during this whole process, even if I take any notes, I will destroy them at the end of the session. So this is all confidential. You can walk out of this ADR process anytime. I cannot be summoned in a court of law even. The mediator cannot be summoned in a court of law. Arbitrator can be summoned and he can be subject to cross-examination. But mediator is not to be summoned. In parties, if they tell me their heart, party tells me his heart out. In this particular case, I will be holding a separate session with the person who is the agent for Apple phones in Pakistan. And I'll ask him, did you enter into this contract? He will say yes. I'll say, do you owe these 50 crore rupees? He will accept it. He will never say no. He will say, I accept it. Now I'll ask him, why don't you pay? He will tell me that I have some losses in business. I want to pay. I ask him that how you want to pay. He says, I am ready to pay if there are some installments for this payment, and I can pay in installments, and with a rider that the other party will continue the relationship as it was, that current will be paid immediately every month, end of every month, and these installations will be paid, over a period of time. I ask him that how much installation you have in mind. He will say that if you break it up, and I'm ready to pay him, let's 50 lakh rupees as arrears in installments, and the current I will be paying later on. This is what I want to say. Now, after hearing him, I go to the other party and I tell him that the other party is offering this, and he has given me this permission that I pass on this information to do, that he is ready to pay as long as this is paid in installments. One, secondly, if you agree that the current situation will continue, and he's ready to pay 50 lakh rupees as installment. Now the other party will say 50 lakh is just a joke. You will break my money into pieces, and this is not acceptable to me. I bring them together again in a common room, and then they come out with solution, and they reach in between some solution. Let's say they say, okay, the arrears will be paid like 2 crore rupees every month, and the current, like previous situation, it will continue. Both parties, when they accept it, mutually agree and accept it, it will be resolved into a writing. And I am not the one who is going to write the judgment. The parties themselves, whatever they say, that will be written. Even if their lawyers are present, they will draft that agreement. And this agreement I will sign as a witness only. It is not my verdict. Now it goes to a court of law, and this question people ask me all the time, that what will be the guarantee that this will be acted upon. I will tell them, and I always tell them, that for your purpose also, go through Civil Procedure Code, and I am referring to Order 23 Rule 3, which is a provision in law which says that during the course of a case, if parties enter into some kind of compromise by any means,
the court is bound to pass a judgment in accordance with that. Now, this compromise is not as a result of their direct negotiation or the lawyer to lawyer or party to party. This is something which has been reached as a result of mediation. And now when this mediation agreement, final agreement reached between the parties reaches the court is bound to pass a decree in accordance with that, unless it is unlawful or unconscionable. Court is bound to pass a decree. When it passes a decree, it will be having the same force as a decree of the court, enforceable at law. So this is a win-win situation for both of them, because this decision is not subject to appeal. Everybody is happy and they will live with it. And the relationship is also saved. In this particular case, business relationship is saved. And this is the beauty of mediation. And so I told you and perhaps made you clear on that, what is the difference between mediation, arbitration, and court decision. ADR offers a way to settle dispute without needing to involve the courts, and generally involves bringing in a neutral and impartial third party. The ADR was first, this term ADR was first formally used in 1976 in a Pound conference held in USA. However, there were various processes which were in existence before this time. At the time, courts were finding themselves overstretched, trying to cope with new filings, and there were concerned that because of this congestion, justice was not being served. ADR methods are different. Since I have passed on this presentation of mine to you, you will be reading it out. But I tell you shortly that what methods are ADR. One is negotiation. Negotiation is something which our parties negotiate directly, maybe through lawyers, but there is no third party neutral present in that. That is a negotiation. This is a mode of ADR. Then I told you about mediation, which is a third party neutral intervention. You know, he facilitates, he does not decide. Then conciliation and mediations are replica of each other. But these terms, sometimes at community level, mediation, conciliation is used, and in some cases, mediation is used. Then there is construction adjudication, then there is arbitration. Then there is now a very popular mode around the globe, which is mediation, arbitration, and arbitration mediation, where part of the dispute is settled through mediation and rest of it is done through arbitration. It results in narrowing issues, and this is again popular. Then there is a mini trial. A trial is held, but this is not binding on the parties as such. But a trial is held to find out who is right and wrong that way. But again, this is an ADR process. E&E is a process where an expert, third-party expert, he looks at the things and matter is referred to him. Am I being heard? Hello? Can you hear me? Hello? Sir, yes, you're audible. Okay, that's it. I was worried that maybe I am once again offline. Okay, we continue with it. And E&E is something where the parties go to a third party, but this is very popular back home in USA, which happens to be my second country. And here I stop and tell you one thing. Some kind of ADR was always there in every part of the world, but we have to give this, credit to the Americans. They are the one who institutionalized ADR in the whole of the world. They inherited this common law system like us. There was a huge backlog, and in California, it started that they started experimenting this mediation. Then it was followed in America, and then America was followed by everyone, England or Europeans and everybody, because they put in a manner where they have a process, institutionalized it. People follow it. Now there is a qualification for mediation also.
which is 40-hour training program, which I suggest to you. You guys should also be doing it. Here is a point of information for you that in case of doing law practice, you need to have a degree from the law degree from a law school. And after getting a law degree from the law school, you are to pass a bar entrance exam, and then you are given a license to practice. Similarly, if you are a chartered accountant, you have to go to Institute of Chartered Accountants. They will give you a license, only then you can practice as a chartered accountant. If you are a doctor, then after having your MBBS degree, you need to be given permission by the PMA, and only then you are entitled to practice as a medical practitioner. Similarly, arbitration and mediation, though anyone can be appointed, but it is a qualification again. If you want to do international commercial arbitrations, you ought to be accredited by Chartered Institute of Arbitrators in England, which we call Sierra. They have a Pakistan branch as well. So you have to be accredited by them as arbitrator, and you either become a member. Next stage is like fellow, which is advanced stage. But if you have this qualification internationally, you can be on different panels, and that is the prerequisite for that. For mediation, there are about 5-6 renowned international institutions which give you accreditation. One of them is CEDAR. This is London-based. Other is IMI. Then we have CMC. Then we have SMC in Singapore. We have JAMS in America. And then there are code annexed programs also. You know, if I tell you, I got my accreditation in America about 27 years ago, and that was by the US courts. And the next stage was that I got then accreditation as a result, as a master trainer, as a result of Train the Trainers program. And then we developed different academic things and different programs for accreditation. I've been doing it then. We did it with CEDAR, World Bank, and with the help of IFC. Then again accreditation, then master trainer, then Train the Trainers program, and these things, and we went through all this. Right now, internationally or even in Pakistan, some institutions they are offering these courses, and this is 40 hours, 5-day hands-on training. If you get that, and you qualify that, you got an accreditation either by IMI or CEDAR or CMC or SMC or JAMS. I told you these are the institutions. And they give you a stamp, you will be accredited mediator. And internationally, this will be another thing. So this can be another tool in your toolkit. Do think about that as well. This is what it is. Early neutral evaluation is very popular in America, where a third-party neutral, if you go to a lawyer, he says you have a strong case and you're going to win. And the parties also believe that they have a strong case. And either you are a plaintiff or you are a defendant. As they say, your case, my case, and the true case. True story lies somewhere else. Everybody has his own story, and he thinks that I am 100% correct. If before going into litigation, you go to a third-party neutral who doesn't have any interest, and he weighs your evidence and your case, on the basis of that, he evaluates it and tells you that this much chance you have in a court of law, you should go to court or not, or if you go to court, you are likely to get this one. People come to terms and then don't go for litigation at all. It is why it is popular in the Western America, because their costs follow the event. And if you go to a court of law and lose something, then you are ruined. So people go to early neutral evaluators and get their claim evaluated.
So this is another mode of ADR. Then expert determination. Some expert in that particular field, like construction disputes, you have an engineer, you could have a financial expert in a financial matter. You got determination from there. Now, online dispute resolution is very popular. ODR. This is I do it all the time. But this is working from home, and this is what we do now these days with the advent of this technology. And this goes without saying that after the invention of wheel, internet is the next invention in whole humankind history, which cannot be ignored now. So this is in court system where we have virtual courts, we are doing e-filing, we are similarly we are doing arbitrations and mediation on online also. So online dispute resolution is another ADR method. Then there is private judging, which we do, again, I tell you, not binding, and summary jury trial. This happens in America, we don't have a jury system in Pakistan, but this is a mode of ADR again. One by one, and I have given a very detailed on description of each of these modes. If you just go through that presentation, you will be able to understand what is meant by each and how it is popular in different kinds, different countries of the world. Having discussed that, I now come to different modes and how the genesis development of ADR is that force of ADR originated in USA, as I told you, to discover the option of the time-consuming and highly priced conventional legal system. The agreement of legal disputes out of doors, the traditional legal method is prevalent in India. In the early village systems, the dispute became settled via way of means of the elders and senior most contributors of the village community. Since the Vedic length, while arbitration and mediation had been the principal type of dispute resolution, the early treaty of the arbitration became on Varinka unpunished, which consisted of diverse lessons, arbitral bodies prevalent in Vedic era. And I tell you, in 1990, US Congress enacted the Administrative Dispute Resolution Act, which gave federal agencies additional authority to use ADR in most administrative disputes, and negotiated Rule-Making Act, which directed regulatory authorities to use negotiation to develop administrative rules. In 1996, both these laws were reenacted as part of the ADR Resolution Act. In European Union, the importance of ADR was recently affirmed in 2007 when Article 65(2)(g) of the Treaty of Lisbon established that European Parliament and Council shall adopt measures aimed at ensuring the development of ADR. ADR resolution gained immense importance during Mughal regime when the Mughal laws were incorporated in Indian culture. The laws of Muslims were systematically compliant and commentary titled as Hadaya, which contained provisions relating to arbitration. According to Hadaya, an arbitrator, also known as Hakam, was to possess qualities of a Qazi, judge, and his decision was considered to be binding on parties subject to the legality of and validity of the award. On advent of Britishers in India, a formal legal system was developed and ADR resolution diminished. But the formal legal system was time-consuming and expensive, so people again started adapting ADR methods, and it picked up pace. British government promulgated the Bengal Resolution Act 1722, which had the provisions of referring the dispute to arbitrator. Later on, Code of Civil Procedure was promulgated, and British government which also had provisions regarding ADR. Pre-independence legislations include CPC, Indian Arbitration Act, Arbitration Protocol Convention, Arbitration Act of 1940, which is still prevalent. Post-independence, formal judicial system was established, and there were a lot of cases pending there. As a result of that, in India, some
progress took place. I talk about the Pakistani context, especially. Pakistan is a signatory to 1958 New York Convention, and its domestic arbitration framework has been aligned to facilitate the enforcement of foreign arbitral awards. This law is up to date, as it is at par with any other country in the world. International arbitral awards are enforceable. In Pakistan, we have this law in Pakistan, and because of Geneva Convention Protocol, which was signed in 1927, and 1937 Convention of Foreign Arbitral Awards, Pakistan became an early signatory to New York Convention. It was not until 2005 that domestic legislation was enacted to implement its provision. Between 2005 and 11, New York Convention was enforced through temporary presidential ordinance. And finally, then we had this 2011 Act, which is known as Recognition and Enforcement of Arbitration Agreement and Foreign Arbitral Awards. Similarly, while Pakistan signed the Convention on Settlement of Investment Disputes between states and nationals of other states, which is called ICSID Convention 1965, it only enacted the Arbitration International Investment Disputes Act in 2011 to implement the ICSID framework. After talking about this act, I move ahead and I tell you, I have given the breakup of all this. In Arbitration Bill 2024 was promulgated, and this law is under discussion, and I have a lot of reservation about this law, and this is still under debate because it is a defective law as well and not at par with UNCITRAL. At the recently held Pakistan International Dispute Weeks, there was a strong criticism on this law, and we resolved that we will be proposing to the legislature to enact a proper law, and even UNCITRAL vice president was here and they were objecting to it. But sooner we have this law, better it is, we need it. I have given a summary of a lot of judgments. You will find it that year-wise where ADR, both arbitration and mediation, is being supported by so many judges on all these judgments I have spelled out in this. The existence of a strong legal professional with a primary interest in adversarial litigation and arbitration, and the neutral suspicion of commercial or trading partner or opponent who is perceived as having committed a wrong, the neutral human reluctance to take responsibility for finding a solution, these are the things which promote adversarial system, and people have tendency to oppose us. But international business disputes are now internationally being resolved through ADR, including this mediation. There is a UN UNCITRAL and Hague conference on this. Then we have a WIPO ISD mediation on this. We had this Singapore mediation 2019, and last year in 2024 we had another Singapore Convention. Now Pakistan is also a signatory to it. Right now, about 82 countries around the globe, they have signed that even international commercial mediation is now to be tried the way arbitration was being tried. So this is the international context. But it is not a very old phenomenon. Third-party mediation entrenched, I tell you, in United Kingdom, United States, Australia, and Canada. Law on mediation developed in all C countries, and EU, Sri Lanka, Bangladesh, India have legislation on mediation. In Pakistan, we have Section 89A of the Civil Procedure Code 1908. We have the Small Claims and Minor Offences Courts Ordinance. I have spelled out all these laws. We talk about ADR. In local government, we have a concept of Musalihin, a community model, again a success. This is, we have that local government Section 102 and 106. Yes? Hello? I am going to wrap it up. I've spelled out all these laws. Incidentally,
you are listening to someone who has drafted all these laws. I'm author of all the ADR laws in Pakistan, including this new civil procedure code, which has now Order 9A and 9B, which talks about mandatory referral to ADR, and that I'm author of that as well. National Judicial Policy 2009 talks about ADR. Now it is one of the subjects being taught at law schools also. Why mediator? Turn your dispute from a business threat into a business opportunity. Whenever there is a dispute, there is always an opportunity. So this is a crispy sentence which I say to people, because where disputes are not resolved, this is incentive to investment. Nobody will go and invest in a country where disputes are not resolved. So third party neutral's role, I have told you already. I have different surveys conducted which says which kind of candidate cases are good candidates. All cases are not good candidates, but majority of the cases are good candidates. There you can say family business are good candidates, and it goes on and on. And some cases like intellectual property rights are no good candidates. There are some positive feedbacks and some negative feedbacks on this. I have spelled out those and I told you earlier. But success or failure in any preservation endeavor is the result of success or failure in understanding where things went well or where they failed. And most important, why? What would you attempt to do if you knew you could not fail? Galti ki gunjaish nishta. So then you have to come to ADR. And what is the success rate of ADR? I tell you, it is 80% success. Mediation saves money, saves time, saves business relationship. And why do you prefer mediation? First is, this is as a result of survey. It is cost saving. Then it is time saving. Relationships are saved. Control of the parties, confidentiality, and voluntary in nature. In 70% of the successful mediations, an accredited mediator has been appointed. How much less? I say 70% less. It is easier. Training for mediation is must. Here I have spelled out in this figure. What are the attributes of a good mediator? He has to have hard head, big ears, clear eyes, small mouth, big heart, ego container, big bladder, big feet, firmly on the ground. To me, mediators are born, but you still need to refine them, fine-tune them. Some people don't have it. Kai log jhagde badha dete hain. But, you still need to train them. There are certain recommendations that these laws should also be there, and I have spelled out those also. Here I have drafted a mediation clause for contracts model clause. The way you have mediation clause, people should be persuaded that we have this mediation clause also. Try mediation before going to litigation. And then, to my mind, there has to be an integration between mediators, court and lawyers, government and general public. Success requires well-trained mediators working within an established legal framework with carefully drafted procedural rules and enforcement mechanism. We then need to find a way to stimulate the use of ADR and to increase its acceptance among lawyers and judges as the general public. Then challenge, it should be kept in mind that there is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful of success, nor more dangerous to manage than to introduce a new system of things. For the introducer has his enemies, all those who benefit from the old system, and only lukewarm defenders in all those who would benefit from the new system. You see, people are complacent, and where the complacent people go, they dismiss anything new as fad. They rest in peace. They are stuck in status quo. Analysis, paralysis, followed the same strategy year after year. Don't take challenges seriously and rest in peace, stuck in the status quo. Change is a process, not an event. We have to learn these techniques. I tell you, now we have laws all over the place.
We need to train people. We have to reach people, and people who are suffering the pangs of the system, the litigators, who are my paymaster of the judges, paymasters of everyone. They must get litigation resolved. They must get dispute resolved. So there are still many issues: low acceptance rates, lawyers and mediation, low judicial motivation to promote use of mediation, really assisting judicial reforms, lack of respect for the legal norm. Resistance, what kind of resistance? I see internal individual resistance, internal group resistance, external resistance. These are opposition. Here is a crispy sunset, sentence for the lawyers. Let the lawyer to become a mediator rather than a mere pleader. So why don't you adapt this thing? So Henry Ford said, don't find a fault, find a remedy. Here I have spelled out the survey. And I have been in charge of a project in Punjab. I established 36 centers in 36 districts of Punjab, and I trained 149 judges for court and ex mediation. And Justice Mansoor Ali Shah Saab, who happens to be a buddy, I was advisor and consultant to him. We settled 80% cases without going to trial. But it was stopped. 36 districts, 4230 references, 52798, 3 months period, and we settled it. For people, I devised something in Urdu also. Suniye, kahiye, hal kijiye, na teri jeet, na meri jeet, sabki jeet. Basalit na ke muqaddama bazi. Here I always put a question to the participants. How is change needed? Many times in order to survive, we have to start a change process. We sometimes need to get rid of old memories, habits, and other past traditions. Only freed from past burdens can we be successful. Do you know what is the age of this eagle? A wild guess. Anyone out of you, please open your mic and tell me, wild guess, what is the age of this eagle? No guesses? I tell you. The age of the eagle, when he is about 27 to 28 years of age, his beak is bent, his wings become very heavy, and he then takes a flight and goes to the mountains. And as a result of this maiden flight, he goes there. कहते तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. वो जाके ना अपनी चोंच तोड़ देता है, अपने पर नोच देता है, अपने पंजे भी खींच देता है. उसके बाद वो को 2-3 माह के बड़े डिफिकल्ट पीरियड से गुजरता है. उसके नए पंजे आते हैं, उसके नए पर आते हैं, उसकी नई चोंच आती है. उसके बाद वो मैदानों में आता है, और उसके बाद वो 75-80 साल तक जिंदा रहता है. तो अगर वो ये फ्लाइट, ये हमारे सिस्टम का हाल है. अगर इस तरह की फ्लाइट न ली तो कुछ नहीं बनता. अब आप पूछेंगे कि ये मैडोना क्यों लगाई? तो मैडोना वैसे मुझे अच्छी तो लगती है, लेकिन ये ना देखें कि क्या कह रहा है, देखें कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखें. उसने कहा, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन फेट, वी रीप व्हाट वी सो, वी गेट व्हाट वी गिव. ये मैडोना ने कहा. आप जो बोगे वही काटोगे. और हमारे जो दुनिया में पहली मेडिएशन हुई है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई थी, और वो तब थी जब हिजर अस्वद का वाकया हुआ और मुख्तलिफ कबीले आपस में लड़ पड़े थे कि किसने तमीर नौ हो रही थी काबा की, किसने हिजर अस्वद को रखना है. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक चादर लें, सब कबीलों के लोगों को कहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव उसके कोनों से पकड़ लें, और वो जब खाना काबा में जहां पे रखना था उठा के रख दिया. तो ये पहली मीडिएशन थी. कुरान पाक में लिखा है सुलहुल खैर. और हजरत अली करम वजह ने कहा है कि कुफर का निजाम जो है ना वो तो चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता है. जिस माशरे में इंसाफ ना, वो जुल्म का निजाम. और कुरान पाक कहता है सुलहुल खैर, अगर झगड़ा हो तो दोनों अफ्रीकन से एक डाल लो, इसके अंदर भले भला. ये हमारे सिस्टम, हमारे रिलीजन में है, हमारे कल्चर के करीब है. और शेक्सपियर ने कहा था, पीपल हैव लॉस्ट देयर रीजन एंड जस्टिस हैज फ्लेड टू पीस. Thank you very much. This is what I wanted to say. And now I am open to questions.
and do ask me questions, and I'll explain to you whatever you have in mind. Sir, if you prefer, I can read out the questions and then you can answer. इसको आप ना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, आप वैसे ओपन करते बड़ा करते हैं, इसको स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर दे ताकि ज्यादा लोग नजर आ सकेंगे. मैं आपको ना इसकी एक पीडीएफ वर्जन जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, आप इन सबको भेज दीजिएगा, ठीक है? इनको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है. मैं अपनी आपको 2-3 और भी लिंक बताऊंगा जिसपे जाके आप इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे पढ़ सकते हैं और इवन लेक्चर भी सुन सकते हैं एडीआर पे, और मैं आपको भी दे देता हूँ. लेकिन डू आस्क मी क्वेश्चंस प्लीज. Sure. Sir, so there is a question. For a law student who wants to build a career in ADR, where should they start and what skills or certification would you recommend? First of all, at the law school, and I'm sure in all the law schools in the first year now, ADR is being taught. That is a thing which is being done. I propose to these law schools कि आपको एक syllabus में ऐसी चीज शामिल करनी चाहिए कि ADR को by way of optional subject लेके आए, और स्पेशली लास्ट 2 years के लिए, और उसके अंदर आप 2 सेमेस्टर्स का एक कोर्स है वो पढ़ाना चाहिए. एक तो आपको लॉ स्कूल से आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं. यहाँ मैं एक बात रोक के आपको बताना चाहता हूँ कि टू बी ए मीडिएटर और आर्बिट्रेटर यू नीड नॉट बी ए लॉयर. आप लॉयर हैं फिर भी हो सकते हैं, आप लॉयर नहीं हैं, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और किसी खास टाइप ऑफ डिस्प्यूट के अंदर तो बहुत अच्छे मीडिएटर्स जो हैं वो नॉन लॉयर्स भी होते हैं. और वी हैव कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स, वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर शायद बहुत अच्छा मीडिएटर और आर्बिट्रेटर है. इसी तरह से कम्युनिटी लेवल पे जो मसालेहीन का कॉन्सेप्ट है, एल्डर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे प्रूव टू बी वेरी गुड न्यूट्रल्स एज मीडिएटर एंड आर्बिट्रेटर्स. अच्छा, ये आपको बिजनेस स्कूल में भी ये पढ़ाया जा सकता है, सिर्फ लॉ स्कूल की कौन सी बात है कि वहाँ पे हो. इसके अलावा आपको मैंने जो एक्रेडिटेशन बताई है 40 आवर्स की, ये आप जरूर करो. इधर पाकिस्तान में आप कई इदारे करवा रहे हैं. अगर किसी को करनी हो तो यहाँ पे कई इदारे हैं, जैसे एक अदारा जो है वो करवा रहे हैं, और ये इसके अलावा जो है ये टीएमसी वाले कराते हैं, सीडर वाले जो है ये सीआरएफ वाले जो है वो करवा रहे हैं मीडिएशन के कोर्सेज. तो ये सब ना आईएमआई की, सीडर की और सीएमसी की सर्टिफिकेशन वगैरह देते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है. वो आपको 5 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा. और लेकिन ये है कि अब अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे कोई अफोर्डेबल थोड़ा सा हो तो किसी वक्त आपके फॉर्म के जरिए से मैं रेफर भी कर सकता हूँ कि ये वाला कोर्स आप कर लें. लेकिन आपको 5 आवर्स की जो एक 40 आवर्स की 5 डेज की ऑन हैंड्स जो है ना वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए. तो वो आप कर लें तो ये आपकी मीडिएशन की नंबर 1 बात होगी. इसकी बुनियाद पे क्या होगा, आप मुख्तलिफ पैनल्स के ऊपर आ जाएंगे. पैनल्स पे आ जाना एक बात है, लेकिन उसके बाद जो आप रेपुटेशन अर्न करते हो ना, वो तो जैसे लॉयर के पास लाइसेंस है, ये जरूरी तो नहीं ना कि अगर वो लाइसेंस है तो उसके पास केसेस भी आएंगे, एक डॉक्टर है तो उसके पास जो है वो मरीज भी आएंगे. वो रेपुटेशन आप बिल्डअप इस तरह करोगे कि जितने आप केसेस अच्छी तरह से रिजॉल्व करेंगे उसी तरह से आपकी जो है ना वो रेपुटेशन बढ़ती है और वो बढ़ती चली जाएगी. फिर आप कल अब्रॉड जाएंगे और अगर हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो वहां पे भी आप एडीआर वगैरह को वहां पे भी पढ़े. साथ साथ इसी तरह एक्रेडिटेशन आर्बिट्रेशन वगैरह की भी करानी चाहिए. तो वो अगर आप एक करवा लेते हो उसके बाद आप पैनल्स पे मुल्क में इंटरनेशनली भी आते हैं और उसके ऊपर फिर आपकी रेपुटेशन बन जाती है और उसके बाद केसेस हैं. एंड आई टेल यू, ये ना बड़ा एक ग्रेटिफाइंग काम है और स्वाब का काम भी है. और वो रात जब से मैं मीडिएशन में कोई केस डिस्प्यूट रिजॉल्व करके मुझे नींद बड़ी अच्छी पड़ती है. लिटिगेशन लोगों के झगड़े बढ़ा के कमाना क्या है, पाकिस्तान का तो लीगल सिस्टम वैसे भी 1
40th नंबर पे दुनिया में है। दादा मुकदमा दायर करे, शायद कभी पोते को इंसाफ मिले। तो ये कोई निज़ाम और इंसाफ थोड़ी है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। और हमें तो ये इनोवेशन की ज़रूरत है। और ये शुक्र है कि अब ये सोच कम से कम आ रही है, लेकिन अभी भी उस स्पीड से नहीं आ रही जैसे आप सारे ममालिक में। मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ और उनके साथ काम करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ और प्रैक्टिकली भी ये काम करता हूँ। तो बिलीव करें कि इंडिया में लोक अदालत का कॉन्सेप्ट इतना कामयाब है। और मैंने आप बता रहा था कि बंगालियों को पढ़ाने के लिए ये हो गए हैं 20 साल पहले मैं पहली दफा उनके जजेस की ट्रेनिंग करने दूंगा। लेकिन कमाल के वो लोग हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस जिस तरह हमारे बैंकिंग केसेस है उनमें इंट्रोड्यूस कराया, वो इतनी सक्सेस की उनकी रेशो है जिसकी आपको हम अभी तक बहुत सारे और लॉज हैं उनमें ला ही नहीं सके ये, और हम सीरियसली ट्राई नहीं करते। वहां पे सालिश अदालत का इतना कामयाब तजर्बा है बंगाल में, श्रीलंका के अंदर इतना ये हिट काम है, बहुत उधर भी रिजॉल्व हो रहे हैं डिस्प्यूट। चाइना, आजकल मैं चाइनीज के साथ काम करता हूँ, इनफैक्ट अभी भी नेक्स्ट मंथ में जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग करने के लिए। वो पढ़ाता तो मैं ऑनलाइन हूँ, मैं प्रैक्टिकली उधर लोगों की यही ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। वो लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। अब इंटरनेशनली ये बहुत इन थिंग है और वकालत के लिए बड़ा एक ल्यूक्रेटिव काम है और लिटिगेशन से बहुत बेहतर है। इवन इंग्लैंड में भी आप हैरान होंगे कि इवन सिविल और साइड के डिस्प्यूट्स के अलावा क्रिमिनल साइड के जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें भी आउट ऑफ कोर्ट सेटल होने के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं। अब वलायत में मैं वहां पे भी क्योंकि वकालत करता हूँ और जाता हूँ, तो वहां पे मुझे तकरीबन 80% से ज्यादा केसेस सिविल और क्रिमिनल पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं। और अगर मेरा कोर्ट में केस लगे तो आधा घंटा पहले कॉज लिस्ट आती है और एक दिन में केस खत्म या 2 दिन में खत्म। सिस्टम तो इसको कहते हैं, ये कोई सिस्टम थोड़ी है। तो लिहाजा हम भी ये भी उड़ जाएगा। यहाँ पे आज नए लोगों के लिए यही चांस है। आप यंग बच्चे हो, मेरा यंग लोगों पर बहुत ज्यादा होप है क्योंकि इस मुल्क का फ्यूचर भी यंग लोग हैं। 62% इधर यंग लोग हैं। बूढ़ों को हटा के नए लोगों को जगह दे दे तो काम सही हो जाएगा। अगर आप वकालत सीख रहे हैं तो ये चीजें सीखने की हैं। आप ADR सीखें, आप एनवायरमेंटल लॉ सीखें, आप कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स सीखें, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसको देखें, साइबर लॉज को देखें, आप साइबर सिक्योरिटी को देखें। अब ये दुनिया इधर को जा रही है, ऑयल एंड गैस का जमाना है। ये चीजें जो दकियानूसी पुराने वकील हैं उनके लिए तो दुनिया वैसे ही खत्म हो गई है, वो तो कोई चांस ही नहीं। तो बाहर तो ये बहुत प्रॉस्परस लोग वकील होते हैं। यहाँ पे ये काम खराब हुआ। आज अमेरिका जो दुनिया का नंबर 1 मुल्क है उसके अंदर सबसे जो खुशहाल लोग हैं वो 4 हैं, या IT वाले हैं, या अकाउंटेंट है, या डॉक्टर है, या वकील है। यहाँ पे भी कोई आज से 40 साल पहले सबसे अमीर लोग वकील ही होते थे। अब तो इसका सत्यानाश हो गया और क्योंकि सिस्टम ही डिलीवर नहीं कर रहा। इस तरह के सिस्टम में किसी को जाना जो है ना वो कोई फायदा नहीं। मैं सिस्टम में सक्सेस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप 20-30 लॉयर्स इन पाकिस्तान। कुछ 27,000 मैंने केसेस लड़े होंगे। मुझे तो लगता है ये लोगों की दुआएं और बददुआएं और आहें लेने वाली बात है। मैं इंसाफ उनको कहाँ लेके दे सकता, मिलता ही नहीं। आम आदमी का तो केस ही सुना नहीं जाता। सियासी केसों में इतना इतना टाइम लगता है। हम ये इनोवेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक आप केस मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ये नई चीजें नहीं करेंगे, तो फिर पुराने बंदे जो है वही चिमटे रहेंगे और वही अपने लिए सारा रास्ता निकालते रहेंगे। अभी भी नया आर्बिट्रेशन एक्ट पे मेरा सबसे बड़ा एतराज ये है, और इंशाल्लाह मैंने नहीं बनने देना क्योंकि अब तो मैंने डिबेट बहुत खुलवा दी है। वो आप कह रहे हैं सिटिंग जजेस आर्बिट्रेशन किया करेंगे। भाई पहले ही आप यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यू आर द फोरम ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो कहते हैं आप हमारे पास आए, अब हम वो भी आप ही करेंगे। ये नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। अदालतों में तो तब जाना है, कुछ डिस्प्यूट जरूर जाने हैं। जैसे मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहा हूँ। अगर विंडोज की पायरेसी जो है हफीज सेंटर लाहौर में हो रही है या सदर कराची के अंदर हो रही है, तो अगर एक बंदा जो पायरेटेड विंडोज बेच रहा है वो कभी उनके साथ मीडिएशन करना चाहेगा? वो तो मीडिएशन नहीं, और उनको फायदा भी कोई नहीं। वो कोर्ट जाएंगे, एक प्रेसिडेंट लेंगे ताकि आइंदा वो रिपीट ना हो। तो कुछ केसेस में जरूर उधर जाना है। ऑल केसेस आर नॉट गुड कैंडिडेट्स बट मोस्ट ऑफ देम आर। तो रॉकेट साइंस थोड़ी है ये। अभी किसी दिन आपसे बात करेंगे कि ये जो हमने नई CPC लिखी है जिसके ऊपर ये अमल दरामद नहीं कर रहे, उसके अंदर से मैंडेटरी रेफर टू ADR है, और अगर उसके अंदर से 60% केसेस भी वहां रिजॉल्व हो जाए और डे टू डे वहां पे हेरेंगे तो 6 महीने के अंदर जो केसेस बाकी रह जाएंगे वो तो एक केस डिसाइड हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस है? क्योंकि बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेटस को उनको फायदा है, वो इसके अंदर चेंज लाने नहीं देते। दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन आप बच्चों ने नहीं रुकना, आप तो करें। तो आपको आंसर मैंने दे दिया है कि इस तरह के कोर्सेज वगैरह भी आप जरूर ऐड करें, और आपकी टूल किट के अंदर नई चीजें होनी चाहिए। इस तरह के वर्सटाइल लॉयर्स हैं,
आप ये सीखो, ये वर्चुअल कोर्ट से काम करना है, ये ई फाइलिंग वगैरह क्या होती है। अब तो एआई का जमाना है, इसको सब लोग इतना यूज कर रहे हैं, तो इसकी जस्टिस सिस्टम के अंदर बड़ी जो है ना एडवांटेज है, वो काम आपने सीखना। अब अगर तो मॉडर्न लॉयर इस जमाने के वो बन रहे हैं आप, तो फिर तो आप दुनिया में चलेंगे, वरना ये पुराने बंदे फिर आखिर फारिग हो जाएंगे। ये ऐसे चल नहीं सकता, ये धांधली का निजाम है, ये तो ठीक नहीं। प्लीज आस्क मी अनदर क्वेश्चन। श्योर सर, देयर इज अ क्वेश्चन, जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन सिस्टम है, इसमें कोई भी स्टेट टू स्टेट इशू आए तो उसे रिजॉल्व करता है थ्रू एडीआर, फॉर एग्जांपल सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पाकिस्तान के कोर्ट में इन्हें किस हद तक रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटरनेशनल कॉमर्स आर्बिट्रेशन और डोमेस्टिक एडीआर? बेटी बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। एक बात मैं फिर जरा रिपीट करना चाहता हूँ, लोग ना इंटरमिंगल कर रहे हैं आर्बिट्रेशन को और मीडिएशन को। प्लीज डोंट डू दैट। पहली बात है कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड्स एनफोर्समेंट का मैंने पाकिस्तान का लॉ आपको बताया, वी आर एट पार विद द होल वर्ल्ड। और यहाँ की कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर वहां से कोई भी अवार्ड हो जाएगा ना, वो पाकिस्तान आएगा, उसको एक्सिक्यूट ऐसे करना है जैसे पाकिस्तानी कोर्ट की वो डिग्री है। तो लिहाजा वो तो अवार्ड यहाँ पे अब इन्फोर्सेबल है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं, हम इनकार ही नहीं कर सकते। और हमारी कोर्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई हैं, तो ये मैंने आपको लिस्ट दी है, और जजेस ने उसको इंटरप्रेट कर दिया कि फॉरेन जजमेंट जो है इन्फोर्सेबल है, और हमारे लिए पढ़ने का क्या हम उनको इन्फोर्स करेंगे। अब जो मीडिएशन की आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो हमने अभी मीडिएशन क्लॉज ही नहीं डाली। और आर्बिट्रेशन में भी जो नुकसान आ रहा है, पहले मैं उसकी बात बता रहा हूँ, वो ये हो रहा है, हमने सीट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान में डेवलप नहीं की। हमें जाना पड़ता है, वियना जाना पड़ता है, हमें पेरिस जाना पड़ता है, हमें दुबई जाना पड़ता है, हमें कतर जाना पड़ता है। वो बहुत महंगी ऑप्शन है। हम पाकिस्तान में सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होनी चाहिए जहाँ से दुनिया भर से आर्बिट्रेटर्स आए, ये बात है। दूसरा, ये जो वक्त की हुकूमत है ना, जो वक्त का अटॉर्नी जनरल है या लॉ मिनिस्टर है, वो खुद ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है। जब हम एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं उस वक्त आर्बिट्रेशन क्लॉज हम ये लिखते ही नहीं कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगी, रूल्स क्या लगेंगे। और बाद में हमने ये जितने भी केस हक्कों से लेके जितने केसेस हैं, क्यों हम सारे हारे हैं? इसलिए हारे हैं कि हमारे फिर कोर्ट्स ने जुरिस्डिक्शन यूजर्व की और वो बाहर ले गए केस को, और उन्होंने बाहर डिसाइड करा। उनको पाकिस्तानी कोर्ट्स ने गलत किया। जब आपने एग्री कर लिया था कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन बाहर होगी, तो रूल्स आपको बाहर लगेंगे। तो आपको पता है फिडेक के रूल्स हैं, वो सारे के सारे रूल्स हैं। इसी तरह आईसीएस के रूल्स हैं, इसी तरह मुख्तलिफ दुनिया में रूल है। आप जब एग्री कर लो तो उससे तो बाहर नहीं। हमें अपना फोरम बनाना है, अपने रूल्स बनाना है। जब तक ये डेवलप नहीं करेंगे, अब मैं आ रहा हूँ सी पैक पेन स्पेसिफिक, ये पाकिस्तान की ना लाइफ लाइन है। हम रोजाना कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, सब कुछ। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में से एक चीज जो बहुत जरूरी है, वो तो ये होती है कि अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो रिजॉल्व कहाँ होगा। पाकिस्तान चाइना का कोई फोरम अभी तक डेवलप नहीं है। मैं इंशाल्लाह अजीज बहुत जल्द डेवलप करने जा रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक फोरम पाकिस्तान चाइना का अगर आपस में कोई होता, हम पहले एग्रीमेंट में ये लिखेंगे कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट हम इस फोरम पे, इस एडीआर सेंटर्स पे जाएंगे, जो चाइना में भी होंगे, पाकिस्तान को हमने जाने जाना। उनके रूल्स बने और हम कहीं किसी अदालत में न जाए और सारे डिस्प्यूट अगर वहां पर रिजॉल्व करेंगे, फिर तो मसला बनेगा। वरना यहाँ पे आए आप तो एक डेवलप करने लगते हैं कोई फैक्ट्री, तो वहां पे तो स्टे आ जाएगा। वो तो कोर्ट सिस्टम के अंदर कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फिर खैर जमीन और बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे डुअल टैक्सेशन है, यहाँ पैसे ला सकते हैं, बाहर कैसे ले जाने हैं। वीजा इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें कि ऑन अराइवल चाइना का वीजा, मुख्तलिफ मुल्कों का, पाकिस्तान से चाइना का वीजा लेना हेल ऑफ ए जॉब। यहाँ पे क्यों वीजा नहीं? अगर हमारी उनकी दोस्ती है तो कोई आने जाने की भी बात होनी चाहिए, तो फिर ये चीजें प्रमोट होगी। तो ये सी पैक से स्पेसिफिक तो हमने, अगर आपको शौक है तो आप देख लें, वो जो हमने इसके ऊपर अभी वीक हुआ है, उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन है, वो आपके सामने आएगा। मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। मैंने तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक आर्टिकल भी लिखा। आप लिंक्डइन पर जाइए ना, मुझे आपको मेरा आर्टिकल मिल जाएगा। मैंने सी पैक के हवाले से स्पेसिफिकली क्या प्रपोज किया कि एडीआर के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, और रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट का सिस्टम कैसे ठीक होगा, और किस तरह सी पैक कामयाब हो सकता है, लिखा है उसके ऊपर। आप नोट करें, 2-3 चीजें आपके काम आएंगी। एक तो आप जफर कलानौरी के नाम से ही मैं लिंक्डइन पे हूँ, मेरा ये लिंक है, आप ज्वाइन करें। वहां पे सारे आर्टिकल्स मैं डालता रहता हूँ, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, लगे हुए। मेरी एक वेबसाइट है kalanauri.com, KALANAURI kalanauri.com। इस पे आर्टिकल्स में चले गए, आपको सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर मिल जाएंगे, सारे डालें। एक मैंने अपना
चैनल बनाया हुआ है, वो भी एजुकेशन के लिए। हर लॉ के मौजू पे जितने भी लेक्चर्स वगैरह मेरे हैं और जो भी प्रेजेंटेशन होती है मैं उसके ऊपर भी डाली हुई है, और वहां जाके कहो सुनो, उसको कहो सुनो के नाम से है। तो ये मैं आपको सारे अपने कॉन्टैक्ट्स जो है ना, इनके थ्रू इनको ले लीजिएगा, मैं ये बेटी को दे दूंगा, ये आपको पास ऑन कर देंगी। आप वो ज्वाइन करें, आप वहां पे पढ़ें, आपका हमारा लिंक रहेगा। और फिर मैं आपको स्पेसिफिकली जो बातें कहना चाह रहा हूँ ये है कि आपका फोरम, मैं बहुत आई बी फीलिंग इन माई ड्यूटी कि अगर मैं अप्रिशिएट ना करूँ, ये बहुत अच्छा फोरम है जो आपने डेवलप किया। इससे वो चीजें जो लॉ स्कूल के अंदर जो एक गैप है, वो गैप ये है कि प्रैक्टिस में और थ्योरी में एक गैप है, हमने क्लिनिकल्स वगैरह कोई नहीं बनाया, वो गैप अगर जब तक वहां नहीं बनते हैं कुछ भी, तो ये फोरम्स हैं जिन पे आप सीख सकते हो। देखिए, आप बड़े बड़े लॉयर्स के साथ बड़े इंटरेक्शन आपका होगा, वो आपको गाइड करेंगे, आप उन इश्यूज पे बात करेंगे जो आपके लॉ स्कूल में कभी होनी नहीं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के दौरान ये वाली चीजें जो है वो कर रहे हैं। तो इस फोरम पे और बहुत सारी चीजें हैं, उनके अंदर आप ये देखें कि फ्यूचर एडवोकेसी क्या है, इसके ऊपर कराएं, एडवोकेसी स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो इसके ऊपर कराएं, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने व्हाइट कॉलर क्राइम के ऊपर जो है ना जरूर इस तरह की वर्कशॉप्स और इसी तरह के ट्रेनिंग सेशंस जो है वो करवाएं। इससे लंबे भी हो सकते हैं, वो भी आप करवाएं। और इसके बाद यह है कि कोई फिजिकली भी किसी जगह पे आप इवेंट्स इस तरह कर सकते हैं। वेरी फैक्ट कि यू आर स्टूडेंट्स एंड यू टुगेदर, यहाँ पे बहुत सारे फोरम बने हुए हैं, लेकिन सीरियस काम करने के लिए अगर आप कोशिश करें, और एक बात सबसे बड़ी है वो मैं आपको इनकरेज करूंगा, वो ये करूंगा कि आप ना आर्टिकल राइटिंग किया करें। और आपको इस सिलसिले में कोई गाइडेंस चाहिए वो भी मेरे से लें कि आपने आइंदा पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। आप लोगों के लिए तो इतने चांसेस हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, आप पढ़ने के लिए बाहर चले जाओगे। अगर आप उसके ऊपर कुछ हर्फ की कीमत होती है ना, लिखना पढ़ना चाहिए, वो आप करें। उसको उन आर्टिकल्स के जरिए से आप जाएं, उसको मुख्तलिफ बड़ी बड़ी अच्छी साइट्स हैं जिसके ऊपर आपके वो अगर पब्लिकेशन हो जाती है और बहुत उसके ऊपर फिर डिस्कशन होती है, उस पर फॉरेन अगेंस्ट बातें होती है, वो एज ए प्रोजेक्ट अपने कॉलेजेस वगैरह में भी करें। और ये आप सेमिनार्स भी करवाएं और वेबिनार के साथ सेमिनार भी करवाएं, क्यों नहीं करवाएं। और इसको आप इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। वहां पे आपको स्पीकर्स बहुत, अब की दुनिया के अंदर तो आप घर में ही आप हर जगह इन टच हैं। कल मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ, उसमें कोई 7 मुल्कों के लोग हैं, तो हम अपने घर से बैठ के ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये तो इसका एडवांटेज है ना। तो ये चीजें आप अपने फोरम पे भी लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, लर्निंग होगी। इवेंचुअली जब आप पिक्चर में आएंगे तो उसमें ये भी होगा कि कल को आपके लिए कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। ये जो आपकी सर्टिफिकेशन है, चीजें रिज्यूमे पे लगती हैं, प्रैक्टिकली काम करें, वो कल जॉब मार्केट में भी आपका इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन होगा। आपको किसी जगह क्लर्कशिप मिल सकती है, आपको किसी जगह पे कोई रिसर्च वर्क का काम मिल सकता है, आपको किसी लॉ ऑफिस के अंदर जो है वो जॉब मिल सकती है। इसी तरह आप पढ़ाई के लिए बाहर किसी के लिए काम कर सकते हो। तो होल वर्ल्ड इज ओपन, इसमें तो बहुत सारे आइडियाज हैं और एक एक करके करें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बच्चे काम कर रहे हैं, आप तो हमारे बच्चे हैं। मैं तो पढ़ाता हूँ, इसलिए तो मैं तो जजेस को भी अपने बच्चे कहता हूँ, क्योंकि 25 साल से जुडिशियल एकेडमी में जजेस को पढ़ाया है। और इसी तरह मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को कुछ 27 बरस से पढ़ा रहा हूँ। तो पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के, पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके लम स्किल से लेके या लाहौर गैरजन यूनिवर्सिटी से लेके नस्ट से लेके पाकिस्तान से, यहाँ से बाहर येल से लेके बर्कले से लेके ऑक्सफोर्ड से लेके लिंकन से लेके ग्रेजन से लेके सिंगापुर लॉ स्कूल तक, हर जगह आते जाते हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो ये हरफ की कीमत है। इसी तरह आप करोगे, आप भी आगे से आगे जाओगे। मैं तो लोगों को इनकरेज करता हूँ, मैं कहता हूँ आप भी हमारे बच्चे हैं, आप आगे हैं। मैं तो ये आपको इनकरेज करता हूँ, ईमानदारी से खड़े होकर अपना हक छीने हैं। ये क्या बूढ़े लोगों ने यहाँ पे अकरबा परवरी है, यहाँ के अगर आपका मामा चाचा कोई ऊपर नहीं है, आपके लिए क्या चांस है। हर फील्ड में बच्चे इतने लायक हैं जिसकी कोई हद नहीं है। खासतौर पे बेटियां इतनी लायक हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। यहाँ से बाहर चले जाएं तो वो चूमते हैं। वहां पे मेरा आज तक कभी कोई आईवी लीग में गया हुआ बच्चा जो है विद ऑनर्स कामयाब ना हुआ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है हमारे बच्चे तो बहुत लायक हैं। वहां पे हलाल के पैसों से हर चीज मिलती है, इधर मेरिट है ही नहीं। तो इंशाल्लाह इधर भी हमने मेरिट लाना, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो कोई नहीं है। अब अगर आप लॉयरिंग की बात करते हैं तो इस मुल्क के अंदर 2.5 लाख वकील होंगे, पता नहीं 10,000 ही वकील हैं, वो भी मैं जरा लिबरल ही। बाकी सारे तो ऐसे ही उन्होंने वो ब्लैक कोट पहना हुआ है, दे आर नॉट लॉयर्स। ना अच्छे वकील है, ना अच्छे जजेस हैं। आप तरक्की करके कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं, खड़े हो
और आप रोस्ट्रम पे खड़े होकर आर्गू करके देखें, हो ही नहीं सकता कि आपको रिलीफ ना मिले। जैसा अब दे आर ऑल्सो ऑन द लुक आउट, लोग चिराग लेकर ढूंढते हैं कि अच्छा बंदा है, जब आप काम आता है तो फिर काम भी आता है, तो वो करें वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं, लेकिन बुजुर्गों की खिदमत करें, उनको फॉलो करें। ये सिर्फ किताबों से लॉ नहीं आता, ये सारी चीजों से, और सिर्फ लॉ पढ़ने से बात नहीं बनती। आप फिलोसफी पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ें, आप लिटरेचर पढ़ें, आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन करें, आप करंट अफेयर्स को देखें, और उसके बाद फिर अपने शोबे में भी देखें, तो आप बड़े आदमी बनेंगे। आप बड़े आदमी पैदा होने इस मुल्क के अंदर बंद हो गए हैं। कामयाब जॉब सीकर जरूर है, वो बेशक वकील हैं, बेशक डॉक्टर हैं, बेशक इंजीनियर हैं, बेशक IT एक्सपर्ट है, अपनी फील्ड से इधर उधर कोई बात नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जाया थोड़ी जाती। वकालत के अंदर तो ड्रामेटिक स्किल्स जो है वो भी काम होती है, आप सीखें, आप डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें, आप मूड्स में हिस्सा लें, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशंस बनाएं, आप इन सारी चीजों को करें। वो लकीर के फकीर बन के वही, और वो कौन सी बात है, आप जितने मर्जी एज ले लें, वो रट्टा मार के और अब आप MCQs आ गए, उससे बंदा बड़ा थोड़ी बन जाता है। आप इन चीजों को सीखने की कोशिश करें, वो करें, तो आपके जैसे लोग जो है वो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे। आप बहुत लायक बच्चे हो, आप तो हमसे खुशकिस्मत है, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, साइंस का जमाना है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों तक आपकी एक्सेस है, हर चीज आई हुई है। तो सीज द अपॉर्चुनिटी एंड बी पाकिस्तानी। और अपना, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बेशक आपकी समा खराशी हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ, ऐसे जाता हूँ, बिन टू लाइक 74 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जैसे एक से दूसरे शहर जाते हैं। मैंने पाकिस्तान से अच्छा मुल्क नहीं देखा और इससे घटिया सिस्टम नहीं देखा। अच्छे माँ बाप की खराब औलाद होते हैं ना, वो हम हैं। मैं 4 चीजों पे कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। एक, मैं खुदा को मानता हूँ, इसलिए मैं एथिस्ट से बहस नहीं करता, मैं कहता नहीं मैं खुदा को मानता हूँ, परे ठीक है। दूसरा, मैं आशिक रसूल, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहस नहीं करता। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इतना बड़ा फैन हूँ, वो मेरे हीरो हैं। मैंने उनसे बेहतर ना कोई आज तक स्टेट्समैन देखा, ना उनके से बेहतर लॉयर देखा, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उसमें बहस नहीं। एक मुल्क को, धरती माँ को कोई गाली निकाले, उसको मैं पसंद नहीं करता। लोगों पे तनकीद करें, मुल्क पे ना करें, और वो वक्त अच्छा आएगा, उसके लिए हमें फाइट करना है, उस पर हमें कंप्रोमाइज करना है, वो हमें सच का साथ दे, सच की बात करें। पाकिस्तान में तो सच का कहता है, यहाँ पे तो सच बोलना ही कोई चाहता नहीं। बेईमानी, करप्शन, आप हलाल के पैसे भी मिलेंगे जरूर, अल्लाह ताला देता है, और मेरे जैसा नीचे चलने वाला कीड़ा मकोड़ा जो है उसके लिए ये काम हुआ है। मेहनत करें तो मेहनत का कोई नेमल बदल ही नहीं, और आप मेहनत करें, अल्लाह ताला वहां से देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप हमारा फ्यूचर, हम पीछे तालियां बजा के आपके पीछे खड़े होंगे, लेकिन ये पुराने बंदों को कहें कि ये जो इनसिक्योर बंदे हैं, इनसे छीन ले इक़्तिदार, इनके बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। हर फील्ड में इतने काबिल बच्चे हैं, इन्होंने एक मंजीब मोनोपोली बनाई हुई है, और फिर ये अकरबा परवरी, फिर ये सिफारिश का निज़ाम, बेकार बातें हैं। हमें यहाँ पे मेरिट लाता है मुल्क, जो है मेरिट 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 ला के आके जाएगा इंशाल्लाह, और लाना है, आप लोगों ने लाना है, क्यों नहीं लाना। हमें गलत को गलत कहना है, ये हम कितनी देर तक सत्यानाश करते रहेंगे। यहाँ पे बैठ के हम अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, बिलीव करेंगे हमने इतना काम खराब कर दिया। ये छोटे छोटे मुल्क कहीं के कहीं चले गए। मेरे सामने पूरी मिडिल ईस्ट जो है, इसके अंदर जितना इनकलाब है, वहां की यंग पढ़ी लिखी इंग्लिश और IT लिटरेट लड़कियों ने काम किया। आप भी यहाँ पे करवाएं। IT फॉर द लॉयर्स ऐसे कोर्सेज होने चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश फॉर द लॉयर्स क्यों नहीं होने चाहिए। ये वाली सारी चीजें भी हैं, ये एडिशनल आप सीखें, इंशाल्लाह भला ही भला है। पूछे मुझे और भी कोई सवाल पूछना बच्चे, मैं, मेरी आदत है, मैं ऐसी बातें करता हूँ, मुझे बातें करने का शौक है, प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि हमारा जो अभी सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है कि हम कोशिश करने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सकते। सर काइंडली इस पे कुछ हमें बता दें। यार ये मैं आपको बताऊं, ये आखिरी सांसें ले रहा है, ये सिस्टम रहेगा नहीं, क्योंकि मैं बताऊं इतने नाइंसाफी के सिस्टम दुनिया में कभी नहीं रहा। कई आए और कई गए। दुनिया की अगर आप तारीख देखें ना, बड़ी बड़ी उम्मतें खत्म हो गई हैं, बड़े बड़ी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कहाँ गई रोमन एम्पायर, कहाँ गया बरतानिया, जो जहाँ सूरज ग्रूब नहीं होता, एक छोटा सा जजीरा बन गया है। किधर अब वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट किधर गया है, सुनिए आपने कभी बात है? वो नहीं रहा, ये भी नहीं रहेंगे। वक्त कोई नहीं होता, बंदा ये समझता कि मैं हूं तो दुनिया चल रही है, हम नहीं होंगे तो हम सा होगा। वो मेरा दोस्त जालिब है, 20 साल की उसकी मेरी यारी है। वो कहा करता था कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था,
उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। नाम अल्लाह का बंदे आते जाते रहते हैं, कई आए कई गए, ये कभी नहीं होता। बात यह है कि आप इनसिक्योर ना हो, आप अपना इल्म बांटते हैं, वो जब पुराने हकीमों की तरह सीने में लेके मर जाओ, नए बंदों को कोई नहीं देना। दुनिया उनको याद नहीं करती। हमें कोई काम करने की ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मरने से पहले हम पीछे मुड़ के देखें कि यार मैंने कोई कोशिश तो की थी बेहतरी की। तो आप लोग तो इतने और इतने शानदार हैं, गलत का साथ ना दें, गलत को गलत कहें, ये तो हमें कहना पड़ेगा ना जी। हम जाके इस वक्त बंद गली के अंदर खड़े हो गए, आप दुनिया में पूछ के देख लें, आप जितनी मर्जी बातें करते हैं, कोई यहाँ पे आके आपको एतबार ही नहीं करता, आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। इस मुल्क के अंदर जब तक फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे, ये मुल्क नहीं चलता। आप 26वीं तरमीम लें, आप 27वीं तरमीम, ये तो वर्केबल ही नहीं है। सत्यानाश आपने कर दिया है, ये कौन सी जुडिशरी रह गई है, कौन इनको जाता है। लोग बड़ी बड़ी मोटी गालियां देते हैं वकीलों को और जजेस को, हमें नहीं लोग पसंद करते। ऐसे सच्ची बात करनी चाहिए। हम कहाँ खुश हैं, कुछ भी नहीं। मुआशरे के सबसे लायक बच्चे जो डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं, और आज भी वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद आप CSS का एग्जाम, क्या वो एग्जाम है, सिर्फ आप 6 महीने साल तैयारी करें, आप CSS कर जाएंगे। वो CSS करके ASP भर्ती होना चाहते हैं, यानी कि पुलिसिया, वो एक इम्तिहान पास करके आप सबसे लायक बंदे हैं। आप फॉरेन मिनिस्ट्री भी, फॉरेन ऑफिस भी आप चला रहे हैं, आप वजीर खजाना भी आप हैं, ब्यूरोक्रेसी भी आप चला रहे हैं, DMG भी आपने चलानी है। क्या बात करते हैं। बाहर के मुल्कों में लोग चूमते हैं डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, जो बाहर जाते हैं उनको जरूरत है। हम या उसको TV एंकर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। ये निजाम के हिमायत करने वाला बंदा खुद भी बेनिफिशियरी है, वो अच्छा नहीं है। इस गले सड़े निजाम को जाना है और नया निजाम आना है, और वो नौजवानों ने लाना है। आप लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे आप पे पक्का पता है, मुझे पता है। इतने लायक बच्चे, इतने तो किसी के पास है ही नहीं। ये सारे यूरोप अमेरिका में तो बूढ़े आदमी बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ रही है। तो इसलिए आप खड़े हैं और यकीन करें, आप इस पे ईमान लेके आए, इंशाअल्लाह ताला ठीक होगा। और इसने ठीक होना है। इतनी देर लगती नहीं होती, या लगता होता कि अंधेरी रात है, उसने आखिर उसमें किसी वक्त खत्म होना है। ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने रोस्ट्रम पे आप जाके खड़े हो, नया वकील है, पहले उसको शुरू में कोई नहीं जांच रहे होते, जिस वक्त वो जाके एक जज के सामने एक दफा बहस कर रहा है, जज फिर उसी की बात सुन। स्टैंड अप एंड बी काउंटेड डाउन। आप जितने मर्जी लायक हैं, अगर आप बोल नहीं सकते, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर आपकी लियाकत का किसी को क्या पता चलेगा। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स है, इनको सीखें, ये कॉन्फिडेंस पैदा करें, इंशाल्लाह यू विल बी द विनर। बाकी मैं तो, मेरा दिल रोक के चला हुआ है जी, आज है नहीं है, लेकिन सच ही बोलते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो करते भी हैं और हमें हिम्मत भी है, हमारी कोशिश होती है। और दूसरी बात मैं लोगों का करता हूँ, यू पीपल आर यंग एंड आई एम अ यंग ओल्ड बॉय, आई फील rejuvenated and full of energy when I am amongst young people. So आपसे तो मुझे प्यार ही पड़ा। प्लीज और कोई क्वेश्चन हो पूछे। Sir, there is another question. A person mentioned, I'm doing Kalkin's ADR 40-hour masterclass, so highlight the few benefits of this course in Pakistan for me as a law student. I told you this is yet another course which is a 40 hours training, which is accreditation. You will get accredited, and because of that accreditation, you can internationally claim that you are now accredited qualified mediator, because this ODR ADR have been given CMPT by IMI, CMC and SMC. So this is it, and आपको मोर लगी होगी कि उन अदारा ने आपको कर दिया। बाकी इसके बाद ये जो कोर्ट नेक्स्ट सिस्टम है, इसमें लॉ मिनिस्ट्री में आप अपने आप को एक्रेडिटेशन हो जाएगी इस्लामाबाद स्पेसिफिक, इसी तरह सिंध के अंदर आपकी हो जाएगी। ये उसका एडवांटेज है। लाइक अदरवाइज ये काम की गारंटी कोई नहीं है ये वाला सर्टिफिकेट, ये लेकिन एक क्वालिफिकेशन है। मैं जरा लाइटर साइड पे आपको एक बात बताता हूँ, ये है कि एक बंदा था, वो दाता साहब जाके ना तो दुआएं मांग रहा था कि मेरा बॉन्ड निकला है, मेरा बॉन्ड निकला है। वो पीछे मेरे जैसा एक बंदा खड़ा था, उसने कहा तुमने बॉन्ड खरीदा है? कहता मैंने नहीं खरीदा। जो खरीदा ही नहीं, चले आपने एक फील्ड को अडॉप्ट किया, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तो लेगी, आगे अल्लाह रहम करेगा। इसी तरह ही जैसे आप लॉ की डिग्री ले रहे हैं, ये भी एक आपके टूल किट के अंदर नई किट है। वेरी गुड, अच्छी बात। Sir, there is another very good question. What is the efficiency of ADR, where mostly हमारे यहाँ डिफेंडेंट सिर्फ लॉ का मिसयूज करने में लगे होते हैं, जिससे प्लेंटिफ बेजार हो जाए,
तो ऐसे लोग एडीआर की तरफ कैसे जाएंगे? बिकॉज एडीआर के लिए दोनों पार्टीज का विलिंग होना लाजमी है। जी, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सवाल ना, क्योंकि अब तो सारी जिंदगी इसी काम में गुजर गई है। हाँ, आई एम द एडीआर मैन इन पाकिस्तान, एवरीबॉडी नोज इट। आप गूगल करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम क्या करते हैं। एक सवाल लॉयर्स कम्युनिटी मेरे से हमेशा पूछती है, कहता है, हे गाय, यू वांट टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस? सो मेरा उनको जवाब ये होता है कि तो सारी अड़ गया। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे ये सवाल लोगों ने हमेशा शुरू से ही लेके पूछा है कि लॉयर स्पेशली कहते हैं कि यू वांट टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस। तो मैं उनको कहता हूँ कि हम ना दुनिया में लोगों के झगड़े बढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुए हुए। आप एक बात है, और वो मेरी बड़ी हमेशा कामयाब हुई। पाकिस्तान में ना अप फ्रंट फी मिलती है। हम soliciting is not allowed in Pakistan. We are not in America or England where they say just inform, pay nothing. यहाँ पे ना आपको अप फ्रंट फी मिलती है। एक केस है, वो मेरी अगर पड़ा हुआ है चेंबर में, और वो उसको 10 साल लग जाए तो मुझे क्या फायदा? मुझे कितने का, शायद 100 रुपए पेशी पड़ जाए। अगर वो मेरा केस रिजॉल्व हो जाए तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया और मुझे तो फी मिल चुकी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा ना, लॉयर्स का मीडिएशन में एक रोल है। वो ये रोल है कि पार्टीज बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं अगर वो लॉयर को भी साथ लेके आती है। अब जब लॉयर भी साथ आता है ना, तो वो उनको परसुएड भी करता है और उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हम इससे मशवरा कर लेंगे, और एक उसको फी मीडिएशन में जाने की भी मिलती है। इस तरह से हमने इसको सक्सेसफुल किया है। ये दुनिया भर में हुआ। फिर एक बात है कि अब ना मैंडेटरी रेफरल हो गया है। आपको मैं सिविल प्रोसीजर कोड जो पंजाब की हद तक है, जिसके ऊपर अभी मेरी एक बड़ी किताब भी अमेज़न में लॉन्च हुई है। वो मैंने पहली किताब लिखी है सिविल ट्रायल के ऊपर। आज तक जितनी है वो कमेंट्रीज थी, तो उसमें ये मैंने सारा बताया तरीका का कि अब ट्रायल जो है वो किस तरह होता है। लेकिन आज आपने सीपीसी जो अभी अमेंडेड फॉर्म में है, उसमें आपने 9A जरा पढ़ लेना। ऑर्डर 9A 89 के साथ पढ़ के मिला के पढ़िएगा। अब कोर्ट में चलने वाला हर केस जो है ना, तो मैंडेटरी एडीआर के लिए जाने ही जाना है। मानना जरूरी नहीं है। 30 दिन में फैसला हो जाएगा। अगर तो वो रिपोर्ट कर देगा मीडिएशन के जी ये सेटलमेंट हो गई है। अगर नहीं होता वो रिपोर्ट करेगा नहीं। लेकिन ये आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, मैंने जाना नहीं है। जाना मैंडेटरी कर दिया हमने। एक तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। दूसरी बात यह है कि अब जब मैं आपको ये मॉडल क्लॉज कह रहा हूँ, अगर आप इसको चैम्बर लेवल पे और मुख्तलिफ जगह पे, जैसे लाहौर चैम्बर में मैंने एक सेंटर बनाया हुआ है, वहां पे मेरे पास 69 पीपल एक्रेडिटेड ऑन बोर्ड है। उनमें से सिर्फ 16 लॉयर हैं, बाकी दूसरे हैं। वो हम वहाँ बिजनेसमैन को परस्यूड करते हैं कि पहले परसुएड करते हैं कि आप शुरू में लिखें कि अगर डिस्प्यूट होगा तो हम मीडिएशन के लिए जाएंगे। वहां पे भी लोग आते हैं। इसको इस तरह आप मुख्तलिफ जगहों पे पॉपुलर कराने का ये तरीका कार है। जैसे मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट का बताया है, उसके अंदर देखें मसालिहीन का कंसेप्ट है। इलाके के एल्डर्स जो हैं वो रिजॉल्व कराते हैं। वो भी एडीआर बड़ा सक्सेसफुल। ये पख्तूनख्वा में बड़ा कामयाब हमने ये भी प्रोजेक्ट चलाया था, वो चल रहा है। अब मैं जब स्पेसिफिक मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों ने अपना एक सेंटर बना लिया है और उन्होंने एग्री कर लिया है कि जी सारे जो लोग, सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा जी हम अपने ये क्लॉज रखेंगे और आपसे रिजॉल्व कराएंगे। जैसे मैं सी पैक का भी कह रहा हूँ कि जैसे पाक चाइना का बन गया और इनके जितने डिस्प्यूट है उसमें जाए, तो फिर कौन रुकेगा और कौन है वो जो नहीं जाएगा। आखिर अदालतों में बंदे वहां जाते हैं ना। अभी भी बहुत सारे लोग बदमाशों से जाके मसले हल कराते हैं, अदालत में जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। अदालतों में लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अदालतों के अंदर जब कोई इंसाफ की वो तो कोई नहीं है। हाँ, आप ये वाले केसेस निकाल दें, बाकी थोड़े रह जाएंगे, और डे टू डे अगर ट्रायल होंगे तो अदालती सिस्टम भी जो है ना डिलीवर करना शुरू कर देगा। फिलहाल तो नहीं। अब ये रियलाइजेशन तो कोर्ट लेवल पे भी है। अभी जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, आज की बात है, हालात छोटी है। मुझे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर एडीआर करना चाहते हैं, तो कलानौरी साहब से कहें कि हमारी कोई रहनुमाई करें। हम देखें कि इतनी रियलाइजेशन लोगों को हो रही है कि जजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी लॉ मिनिस्ट्री ने अपना एक एडीआर सेंटर जो है वो वहां पे बना दिया इस्लामाबाद के अंदर। हर तरह के मॉडल्स बन रहे हैं। प्राइवेट सेंटर्स यहाँ पे कई डेवलप हो रहे हैं। ये नई प्रैक्टिस है, ये नया फिनोमेना। और इंटरनेशनल पे बहुत सारे कई फोरम्स के ऊपर मैं बाहर उनका पैनलिस्ट है, वहां पे बने हुए हैं। सिंगापुर में इतनी कामयाब आर्बिट्रेशन और मीडिएशन है,
तो लोग जा रहे हैं वो यहाँ के डिस्प्यूट अब नई बात हमने की है, एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया और उसमें देखें कि क्या फ्यूचर होगा। देखिए, दो मुल्कों का अगर आपस में डिस्प्यूट है तो अब मीडिएटर तो फिर तीसरी कंट्री से या आर्बिट्रेटर तो तीसरी कंट्री से होना चाहिए। तो अगर ये बात होगी तो देखिए कितना काम हमारे लोगों के लिए आइंदा जो है वो निकल पाएगा। तो ये बहुत सारा ऐसा मसला है, और कोर्टें जो है उसके अंदर तो ओवर बर्डन हो गई हैं और वहां पे कोई उसकी भलाई की, ये साई ऑफ रिलीफ हमारे लिए अगर हो सकती है तो वो यही है। वरना आप इस तरह से मसला नहीं हल होगा। आप लॉयर्स भी बेशुमार आते जाएं, यहाँ पे कितने एलएलएम करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग बैरिस्टर बन रहे होंगे, कितने लोगों ने पीएचडीज कर ली। हाँ, प्रैक्टिकल टर्म्स में उनके लिए क्या उसकी अफवादियत है, क्योंकि उनको उन्होंने क्लिनिकल्स नहीं किए हुए, उनको स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं है। स्किल्स इम्पार्ट करना बड़ी जरूरी है, वो हर फील्ड में जरूरी है। पिछली एक सदी में 4 मुल्कों ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, एक जापान है, एक जर्मनी है, एक चाइना और एक साउथ कोरिया है। सब ने टेक्नोक्रेट पैदा किए हैं। आप वही पुरानी एजुकेशन ला रहे हैं। तो जब हर फील्ड के अंदर इनोवेशन हो रही है, तब कल धात के जमाने का लॉयर अब कैसे चलेगा? ये आप उसको टेक्नोक्रेट बनाना पड़ेगा। अब आज के जमाने में वो पुराना जमाना थोड़ी है कि जिसके अंदर हर काम ही आप अदालत में ले जाएंगे। अब नॉन कंटेंचुअस जितना काम है वो बढ़ रहा है। आप देखें तो सही कि कितने लोग वो जो है ना बाहरी अदालत से बाहर वो ज्यादा प्रॉस्परस लॉयर है। अब उसका कोर्ट सिस्टम के साथ क्या काम है, और बहुत सारी चीजें। अब आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट एससीसीपी में कराने हैं, जाएं अभी वेबसाइट विजिट करें, घर से ही सारा कुछ हो जाएगा, वहां जाने की क्या जरूरत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काम करना है, रजिस्ट्रेशन करानी, घर से ही हो जाएगा। और इसके लिए लॉ की डिग्री भी नहीं है, अभी आप ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ भी अगर ये स्किल सीख लेते हो तो आप अभी से कमाई करनी शुरू करते हैं, पैसे कमाए। वो कैसा है कि डिग्री लेके आ गए तो वो कौन से कोई सुरखाब के पर लेके, साथ आप स्किल्स लेके दूसरों से मुख्तलिफ वकील बने। अगर आपको देखें, how to interview your client is a skill, how to render an opinion is a skill, how to prepare your brief is a skill, art of examination is a examination in chief is a skill, art of cross examination is a skill, art of persuasion is a skill, court ethics you have to learn. All these things together, only then you will be, or skeleton of arguments कैसे, आप ये रिसर्च कैसे करें, ये स्किल्स को सीख रहे हैं लोग। अगर ये सीख के आप आएंगे, ये वाला एडवांटेज है, तो आपके लिए तो बड़ी दुनिया जो है वो अच्छी है और नजदीक पड़ेगी और बहुत कुछ हो सकता है। वरना तो आप बेशक जितनी मर्जी तालीम भी ले लें, आप अब लोग रोज पीएचडी कर रहे हैं, मुझे बताएं रियल टर्म्स के अंदर उनकी रिसर्च का फायदा क्या हो रहा है? उसी वेरिएबल्स को अगर आप अचीव कर लें, आपका सुपरवाइजर आपको पीएचडी देता है। पहले पीएचडी को बंदा करता था तो उस पीएचडी का कोई मीनिंगफुल मतलब था, इसलिए कि इसमें रिसर्च नहीं है, ग्राउंड रूट रियलिटीज को जब तक आप नहीं सीखेंगे। और यहाँ बात एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम से हैं, या आपको ना बायलिंगुअल होना बहुत जरूरी है। कहते हैं व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। अगर आपको लोकल टर्मिनोलॉजीज नहीं ना आएंगी तो आपको वकालत के अंदर काफी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि आपका सारे का सारा पुलिस रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में है, उसमें टर्मिनोलॉजीज लोकल इस्तेमाल होती हैं। और इसी तरह आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड जो इवन लोकल लैंग्वेजेस हैं वो होती हैं। कोर्ट के अंदर एविडेंस जो रिकॉर्ड होती है वो रिकॉर्ड उर्दू में हो रही होती है, साइमल्टेनियसली उसको बाद में ट्रांसलेट कहीं पे अंग्रेजी में करते हैं। एडिशनल जज लेवल पे, सिविल जज लेवल पे तो वो भी नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, जजेस तमाम के तमाम जजेस बारिंग फ्यू के कभी कोई सवाल वो उर्दू में सवाल पूछते हैं। और इसलिए आपको लोकल लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है, और चीजों को इंडिजिनाइज करना बहुत जरूरी होता है, और कल्चर समझना बहुत जरूरी होता है। वरना आप ना लॉयर कामयाब हो सकते हैं, ना आप आर्बिट्रेटर काम हो सकते हैं कामयाब, ना मीडिएटर हो सकते हैं, ना हमें जज कामयाब हो सकते हैं। हमें सबको पढ़ना है, हमारे इन्वेस्टिगेटर को पढ़ना है, हमारे प्रोसिक्यूटर को पढ़ना है, हमारे डिफेंडर को पढ़ना है, मेरे जज को पढ़ना है। वरना ये नई टेक्निक्स हैं, आप कैसे कर पाएंगे ये सारा कुछ? बहुत एडवांस लेवल की चीजें आ गई हैं। और कुछ पूछना है? माशाल्लाह आपने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर लिया है। विद योर परमिशन, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट। प्लीज क्लोज इट नाउ। I will just request you one thing। ये मैंने प्रेजेंटेशन तो आपको दी थी, आप अपने पास ही रखना, इसको नहीं मिला, इसका ना पीडीएफ फॉर्मेट में अभी आपको आपके व्हाट्सएप पे कर दूंगा। इन बच्चों को सारा दे दीजिए, और मैं अपना
एड्रेस वगैरह भी उसके ऊपर मेरे लिंक दिन के भी, और सारे जो है ना लिंक्स हैं वो इनको पास ऑन कर दें ताकि ये ना वो वहाँ पे विजिट करके भी चीज़ों को कर लें। और आपके साथ इंशाल्लाह मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि बच्चों आप और किस किस फील्ड के अंदर अभी काम करें, आपको क्या करना चाहिए इस फोरम पे। वंडरफुल, आई अप्रिशिएट व्हाट द वे यू आर डूइंग, आई अप्रिशिएट योर idea, your enthusiasm, and I'm there to support you as elder. Sure. Thank you so much, sir. As law student and young professionals, we are really inspired by your journey and the impact you've made on Pakistan's legal system. So thank you so much for sharing your time, knowledge, and perspective with us today. And a big thank you for everyone who joined. Your participation makes sessions like this truly worth it. Thank you, sir. Thank you so much. Have a great night, everyone. Love I you. love.